Good evening and Assalamu alaikum. Welcome to the sixth episode of our Artificial Intelligence Bootcamp. We're here to going to focus on the art of web scraping. I'm Munib, your host for this session. We're honored to have Malik Ashar Khan, a senior data science student and a seasoned expert in web scraping, as our guest speaker for today's session. Ashar will be sharing his vast knowledge and experience to provide us with a comprehensive understanding of web scraping and its numerous applications. This session is designed to benefit anyone who is keen to improve their web scraping skills, whether you're a student, a data scientist, or a freelancer. With Usher guidance, we hope to empower our audience with the tools and knowledge they need to take their web scraping skills to the next level. We're truly grateful to have you, Usher, here with us in this session, and we can't wait to have learn from his expertise. So, without any further ado, over to you, Usher. Uh, Thank you, Muni. It was such a great introduction. And some of you might know me. I'm a final year BS Data Science student at M Sciences. And how I will just briefly tell you about my web scraping journey, how I came into web scraping. So basically, how it started was that I needed something जिसे मैं फ्रीलांसिंग पे सेल कर सकूं और जिसका काम मेरे डेटा साइंस के साथ भी हो तो कोई ऐसा स्किल जिसे सेल करने से मुझे मेरा स्किल भी ग्रूम हो और मुझे उससे कुछ बेनिफिट भी मिले फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिले सो वेब स्क्रैपिंग वाज समथिंग दैट आई केम अक्रॉस आई थॉट कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल आगे होगा एंड आई वाज राइट क्योंकि आजकल जो मैं देख रहा हूँ काफ़ी इसके ट्रेंड्स बढ़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कंपनीज इसको यूज़ कर रही है और इट्स अ वेरी इन डिमांड स्किल एंड इट्स गोइंग टू बी इन डिमांड इन द फ्यूचर सो without further ado, let's start the presentation. Okay, is my screen visible? Yes. Okay. Okay, so the agenda for today's session is we will discuss basics of web scraping, what web scraping is, and why you should learn web scraping, what are the benefits of web scraping, and then we'll discuss when you should do web scraping. Okay, so it's not that you always have to do web scraping, there are some alternatives available. For example, API. You can use an API to get data from some websites. And there are also some softwares available like ParsHub, Octoparse, and Phantom Buster. So you can use those softwares. And we'll discuss briefly that what are the advantages of using coding and using the softwares. After that, we will have a demo of web scraping, and I will just open a website, a simple static website, and I will do live coding and scrap some data from that website. After that, we will discuss what is a static website and what is a dynamic website and how we scrap data from a static website and how we scrap data from dynamic website. Then we will discuss some legal concerns that is it legal or is it not legal to scrap a website. Okay, so web scraping is something which lies in the gray area, so it's not very clear. People, we will discuss that thing at the end. Okay. uh, I need this session to be interactive, so if you people have any question at any point at any slide, feel free to ask. Okay. Does anybody want to share some idea about web scraping? Okay. Okay, so let's begin with web scraping. The process of collecting data from websites, the extraction of data from websites. जो websites होती हैं उनमें data HTML tags में पड़ा होता है. That data is known as semi structured. हमारा मकसद ये होता है वेब स्क्रैपिंग में कि हम जो वेबसाइट्स पे डेटा पड़ा है जो हमें रिक्वायर्ड है वो डेटा हम HTML टैग से गेट करें और उसे एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लेके आए. फॉर एग्जांपल अ डेटाबेस टेबल और अ CSV फाइल और अ JSON फॉर्मेट. सो एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट से एक सेमी स्ट्रक्चर फॉर्मेट से डेटा हम लेकर आते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मेट में. एंड
यही हमारा सारा प्रोसेस होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। वेब स्क्रैपिंग हम इसे भी कहते हैं कि अगर हम एक वेबसाइट पे जाएं, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है जिसमें लिस्टेड है मूवीज और उनके रेटिंग्स, उनके उनके डिस्क्रिप्शन, उनका रिलीज डेट, ये इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब हम ये कर सकते हैं कि हम उस वेबसाइट पे मैनुअली जाके स्क्रैप करें उस टाइटल्स को और तमाम डेटा को, और एक CSV फाइल में उसे स्टोर करें। लेकिन दिस इज नॉट अ फीजिबल सोल्यूशन। ऐसा हम कर नहीं सकते, क्योंकि लेट्स सपोज वहां पे 1000 मूवीज का डेटा पड़ा है। हमने 1000 मूवीज का डेटा आज स्क्रैप कर लिया है, कल को उस वेबसाइट पे 1000 मूवीज और आ जाती हैं, तो मैनुअली क्या हम उसे कर सकते हैं? नो, दैट्स नॉट फिजिबल। तो लार्ज कंपनीज के लिए ऐसा करना कि वो ह्यूमन को यूज करें, कॉपी पेस्टिंग करके स्क्रैप करें, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए हम ऑटोमेट करते हैं इस प्रोसेस को। वी राइट अ प्रोग्राम, वी राइट अ स्क्रिप्ट which goes to the website and collects the data for us and brings it into a format. So all this process is automated. Okay. Some prerequisites of web scraping. आप अगर वेब स्क्रैपिंग करना चाहते हैं तो आपको what you need to know is HTML, क्योंकि you will be parsing data. सर आपका माइक ऑफ हो गया। सर आपका माइक ऑफ हो गया। नेट इशू होगा शायद। Okay, is it clear now? Am I audible? जी सर। Okay, can anyone please tell me कि किस पॉइंट से माइक ऑफ हो गया था? क्या? सर आप जब प्री रेक्विजिट बता रहे थे। अच्छा, प्री रिक्विजिट। ओके ओके ओके। सो प्री रिक्विजिट्स ऑफ वेब स्क्रैपिंग। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम HTML, हम वेबसाइट से डेटा उठाते हैं वेब स्क्रैपिंग में। सो व्हाट वी नीड टू डू इज दैट हमें HTML की समझ होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, कि हम HTML टैग्स को समझ सकें, तभी हम उससे पार्स कर सकते हैं, उससे डेटा निकाल सकते हैं। एंड अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज ऑफ CSS इज इम्पोर्टेंट, कि CSS किस तरीके से HTML टैग्स को सेलेक्ट करता है फॉर द स्टाइलिंग पर्पजेज। अगर ये समझ हमें होगी तो हम CSS सेलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं अपने वो जो रिक्वायर्ड टैग्स है जहाँ से हमने डेटा उठाना है उसको सेलेक्ट करने के लिए। नाउ देयर आर सम सेलेक्टर्स, नॉट ओनली CSS सेलेक्टर्स, देयर इज XPath सेलेक्टर, और देयर आर आल्सो सम अदर सेलेक्टर्स जो कि स्पेसिफिक होते हैं टू द लाइब्रेरी दैट वी आर यूजिंग. But CSS selector and XPath selectors are very general selectors that we use to select HTML tags. और हमारे पास अगर हम ब्यूटीफुल सूप को जैसे यूज करें तो उसमें फाइंड ऑल, फाइंड, इस तरह के सेलेक्टर्स भी होते हैं। हम जब डेमो करेंगे देन आई विल शो यू हाउ CSS selector looks like and how it works to and how it selects an HTML element. अच्छा, थोड़ी बहुत नॉलेज आपको हाउ मॉडर्न वेबसाइट्स वर्क, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यू कैन देन, अगर आपको पता है हाउ मॉडर्न वेबसाइट्स वर्क, तो आप ऐसी चीजें उसमें से सर आपका माइक ऑफ हो गया। ओके। नाउ इट्स ऑन, इज इट? Yes, sir. Okay, I'm not sure what problem is occurring. Okay. Okay, prerequisites हो गए थे। ओके, CSS सेलेक्टर की बात हो गई थी। ओके, लेट्स रिपीट इट। ओके, तो स्लाइड्स विजिबल है विजिबल है। और आवाज भी क्लियर है। ओके ओके ओके। जैसे ही अगर माइक जी,
ओके, काइंडली अगर माइक मेरा म्यूट हो जाए तो उसी टाइम पे मुझे बता दिया करें. ओके. ओके. Okay. Okay. So some knowledge of HTML and CSS is required and how modern websites work. आपको पता होना चाहिए कि modern websites कैसे काम करती हैं. Like you don't have to be a web developer, but a little bit of knowledge is definitely beneficial. कि अगर आपको पता होगा कि कैसे front end back end को request send करता है for the data थ्रू द हिडन एपीआई, तो आप उस रिक्वेस्ट को मिमिक कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, अपने स्क्रिप्ट में. और फिर आपको फ्रंट एंड से डेटा स्क्रैप करने की जरूरत नहीं होती, आपको बिल्कुल तैयार डेटा प्योर फॉर्म में मिल जाता है. बेनिफिट्स और why it is necessary to learn web scraping or why it is used. तो हमें बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा चाहिए होता है. अब हम तैयार डेटा सेट्स पे रिलाई नहीं कर सकते कि हमें केगल पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे हमारा डेटा हमें बड़ा बहुत स्ट्रक्चर फॉर्मेट में मिलेगा. सो व्हाट बिजनेसेस डू, उनके पास एक टीम होती है वेब स्क्रैपिंग के लिए जो कि उनको डेटा एक्सट्रैक्शन का काम करके देती है बिफोर दे डू एनी एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग एंड दैट टाइप ऑफ स्टफ. अच्छा, तो फर्स्ट थिंग इज कि वेब स्क्रैपिंग अलाउस कलेक्शन ऑफ डेटा. ओके, इट लेट्स अस कलेक्ट डेटा. और डेटा नहीं बल्कि मोस्ट रिसेंट डेटा, क्योंकि वेबसाइट्स पे जो डेटा पड़ा होता है इट इज द मोस्ट अपडेटेड, द मोस्ट रिसेंट डेटा जो कि उनके ओनर्स ने, अपने ओनर्स ऑफ द वेबसाइट ने अपलोड किया होता है. तो हमें एक अपडेटेड डेटा मिल जाता है थ्रू वेब स्क्रैपिंग. और दूसरा यूज इसका ये है कि बिजनेसेस कैन कीप एन आई ऑन देयर कंपेटिटर्स. अब अगर मेरा कंपेटिटर है और मुझे उसके बारे में जानना है, तो मैं ऑन अ डेली बेसिस और ऑन अ रेगुलर बेसिस उसका डेटा स्क्रैप करूंगा ऑन हिज वेबसाइट, जो कि उसके वेबसाइट पे पड़ा होगा. एंड आई विल डू सम मॉनिटरिंग कि वो क्या कर रहा है या क्या हो रहा है. सो फॉर दैट पर्पस बिजनेसेस यूज वेब स्क्रैपिंग, and to do decision making they need web scraping, they need the teams, and they have dedicated teams for web scraping. ओके, अब वेब स्क्रैपिंग की हमने बात की कि इसके एडवांटेजेस हैं, बिजनेसेस यूज़ करते हैं बिजनेस एनालिटिक्स में, मशीन लर्निंग में, और हमें डेटा मिल जाता है ये सब. लेकिन doing web scraping is not the first thing you should do. Okay, there are some alternatives that you have to consider before you do web scraping. तो सबसे पहला तो ये है कि अगर आपको जो डेटा रिक्वायर्ड है अगर वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आपको कहीं से मिल रहा है, सो यू डोंट हैव टू डू वेब स्क्रैपिंग. क्यों वेब स्क्रैपिंग करके किसी और का सर्वर ओवरलोड करें और स्क्रैपर बनाए और इतनी ख्वारी करे. इफ यू कैन गेट द डेटा, जस्ट गेट द डेटा. The second thing is that if there is an API, if there's an API, just use that API. Don't do web scraping. For example, if you want to get data from Twitter, now Twitter provides an API and they provide different versions of their API. You don't have to scrap data from Twitter. ठीक है जी, क्योंकि आपके पास एपीआई अवेलेबल है, आप एपीआई को यूज कर सकते हैं. और एपीआई को यूज करने के एडवांटेजेस ये हैं कि आपको डेटा प्योर फॉर्मेट में मिल जाता है, जेसन फॉर्मेट में. तो आपको एचटीएमएल सोर्स कोड से डेटा पार्स करने की जरूरत नहीं होती है. आपको जेसन फॉर्मेट में डेटा मिल गया, आपने रिक्वेस्ट की, फॉर एग्जांपल आपको ट्वीट्स का डेटा चाहिए, रिसेंट ट्वीट्स का, या किसी एक ट्विटर हैंडल से रिलेटेड आपको ट्वीट्स चाहिए, तो आप उस एपीआई में स्पेसिफाई कर सकते हैं. यू कैन इजीली गेट दैट. एंड वो डेटा जो आपको मिलेगा तो वो जेसन फॉर्मेट में मिलेगा, which is a very pure form of data. तो आपको सोर्स कोड से HTML सोर्स गेट करके और फिर उसे पार्स करने की जरूरत नहीं पड़ती. सो देयर आर फ्यू थिंग्स, यही कुछ चीजें आपने पहले वेब स्क्रैपिंग से आपने चेक करनी होती है कि आपको वेब स्क्रैपिंग करनी भी है कि नहीं. बट इफ इन एनीवेज आप करना चाहते हैं वेब स्क्रैपिंग, आपको जो डेटा रिक्वायर्ड है वो आपको एपीआई के थ्रू नहीं मिल रहा. ठीक है, क्योंकि एपीआई आपको सारा का सारा डेटा, पब्लिकली अवेलेबल डेटा ऑन द वेबसाइट, वो आपको प्रोवाइड नहीं करता. लेट्स सपोज आपको ट्विटर से कुछ डेटा चाहिए, बट द एपीआई डजंट प्रोवाइड एनी मेथड और एनी वे टू एक्सेस दैट डेटा. तो आपको फिर वेब स्क्रैपिंग की जरूरत वहां पे पड़ती है. तो लेट्स से यू गो फॉर वेब स्क्रैपिंग. robots.txt एक फाइल हमारे पास होती है हर वेबसाइट में. अगर आप वेबसाइट का डोमेन टाइप करते हैं, लेट्स सपोज www.google.com/robots.txt, this will open a text file in your browser. आपको एक फाइल
ओपन हो जाएगी जिसमें यू कैन सी के वेबसाइट ओनर ने कौन कौन सी चीज़ें अलाउ की हुई हैं फॉर द क्रॉलर्स फॉर द बॉट्स। तो आपको एक रूल्स वहाँ पे नजर आएंगे। उन रूल्स का कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं होता, हर ऑनर उसे अपने तरीके से लिख सकता है, बट यू कैन गेट द आइडिया, इट्स इन द ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट एंड यू कैन गेट द आइडिया of what you can do on that website, of what your bot can do on that website. So you can read that robots.txt file before you do web scraping. Now here's a comparison of why custom coding is better than tools. Obviously, this is a little biased because कुछ लोग कहेंगे कि तैयार सॉफ्टवेयर यूज करे तो इट्स बेटर, कुछ लोग कहेंगे कि कोडिंग यूज करे तो इट्स बेटर। तो why coding is better? मेरी आवाज क्लियर है? जी जी सर क्लियर। क्लियर है। ओके ओके। तो वाई कोडिंग इज बेटर, हम क्यों एक पाइथन कोड या किसी और लैंग्वेज में कोड लिख के अगर हमें सॉफ्टवेयर से या किसी और जगह से वो बिल्कुल इजीली विद क्लिक्स मिल सकता है। सो द फर्स्ट थिंग इज के आप जब कोड लिखते हैं यू आर दी ओनर, ओके, यू आर दी ओनर ऑफ योर कोड। वो सॉफ्टवेयर आपका अपना है तो आप उसे एक बार यूज करें, आप उसे 100 बार यूज करें, कोई लिमिटेशन नहीं। ऑन द अदर हैंड सॉफ्टवेयर आपको पर एग्जीक्यूशन चार्ज कर सकता है। सॉफ्टवेयर जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं दे नॉट ऑलवेज फ्री, और अगर फ्री है भी तो उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। और वो आपको मोस्टली वो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं करते, वो आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो आपको एक डेटा, आपने एक बार आपने उन सॉफ्टवेयर को यूज करके आपने डेटा कलेक्ट कर लिया है, अगली बार आप यूज करेंगे सो फॉर द डेटा यू विल यू माइट पे फॉर इट। यू आर नॉट द ओनर ऑफ द सॉफ्टवेयर। प्लस प्लस उसकी कुछ लिमिटेशन भी है। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, अब आप एक बिजनेस है, ठीक है, आपके पास एक बिजनेस है, आपने एक वेबसाइट को स्क्रैप करना है और कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन है बिकॉज यू हैव नॉट क्रिएटेड इट, समवन एल्स हैज क्रिएटेड इट। आप उसे कस्टम बिल्कुल नहीं बना सकते। आप अगर आपको अगर कोई लिमिटेशन वहाँ पे मिल गई, आपको जो डेटा रिक्वायर्ड है आप उस सॉफ्टवेयर को यूज करके वो डेटा नहीं एक्वायर कर सकते, तो ये आपके लिए बहुत मतलब नुकसानदेह होगा। यू डोंट वांट दैट। तो जो आपका कस्टम सॉफ्टवेयर है, जो आप कस्टम कोडिंग करते हैं, यू कैन स्क्रैप ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ डेटा इफ इट्स पब्लिकली अवेलेबल। इट्स ऑल्सो ऑटोमेशन। किसी का माइक शायद ऑन है। मेरी आवाज क्लियर है? जी क्लियर है। Yes, sir. ओके अच्छा। तो हमारा मकसद स्क्रैपिंग में सिर्फ स्क्रैपिंग करना नहीं होता। we also want to do some web automation. We also want to write a bot that can do some task, that can perform some task for us, और उस task को perform करने के बाद वो data को scrap करे। For example, most of the projects that I have done on Fiverr is something कि जो क्लाइंट होता है उसे एक वेबसाइट पे कुछ काम परफॉर्म करना होता है। ही वांट्स फर्स्ट टू डू समथिंग, टू टाइप अ कीवर्ड, टू सर्च फॉर अ कीवर्ड, और फिर उसके रिजल्ट से उसने कुछ स्क्रैप करना होता है। फॉर एग्जांपल द लास्ट प्रोजेक्ट दैट आई डिड फॉर अ क्लाइंट, व्हाट ही वांटेड, ही वांटेड कि वो एक कीवर्ड टाइप करे, बॉट को दे, और दैट बॉट सर्च फॉर दैट कीवर्ड ऑन यूट्यूब, और यूट्यूब में जो रिजल्ट्स आएंगे वो उन रिजल्ट्स में से कुछ डेटा स्क्रैप करें और कुछ चैनल्स का डेटा स्क्रैप करें, और इवन उस चैनल को सर्च करें एक और वेबसाइट पे, और उस वेबसाइट में उस चैनल से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो कि वो स्क्रैप करना चाहता है। नाउ आई डोंट नो कि कोई ऐसा टूल शायद ही एग्जिस्ट करे जो कि इस किस्म की ऑटोमेशन अलाउ करे आपको कि यू कैन जस्ट डांस ओवर द इंटरनेट, going from one website to other and scraping the required data in one simple CSV file across the different websites। आपका डेटा पड़ा है और आप उसे एक CSV फाइल में लेकर आ रहे हैं। So that is called automation. You can write a bot, जो मतलब sky is the limit, okay? If you want the data, if you do the coding, you can just do anything with it, and it has flexibility. It is a long term solution, just as I said कि businesses को यही चीज चाहिए होती है, ना कि सिर्फ एक बार उन्होंने डेटा स्क्रैप किया, उन्हें ये नहीं बल्कि उन्हें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए होता है। दे वांट टू कीप ट्रैक
दे वांट टू कीप एन आई ऑन देयर कंपेटिटर्स कि वो एक बार सॉफ्टवेयर बनाए, वो एक बार बोर्ड बनाए, और जब भी उसे रन करे तो उनके पास अपडेटेड डेटा आए ऑन अ डेली बेसिस या ऑन अ वीकली बेसिस। वो अपने इस बोर्ड को रन करें और उनके पास डेटा आए। सो दैट्स व्हाई आई वुड से कोडिंग इज बेटर, बट obviously both has its own pros and cons. अगर आपको कोई सिंपल डेटा चाहिए, सो देयर आर ब्राउजर एक्सटेंशंस इवन अवेलेबल, जिसे आप यूज कर सकते हैं किसी वेबसाइट से कुछ डेटा कलेक्ट करने के लिए। बाय द वे, कुछ कॉमनली नेम यूज जो वेब स्क्रैपिंग के लिए यूज होते हैं, दैट इज आल्सो वेब हार्वेस्टिंग। ओके, सो अगर कहीं पे वो भी आपको नजर आए, सो इट मींस द सेम थिंग। There are some, I have listed a very few libraries which is used for web scraping in Python. Obviously, there are other libraries. I will just briefly describe these ones. Requests, the first one. So request की जो library होती है, that is used to make an HTTP request to a server. When you open your browser and you type in a domain name, let's suppose google.com or youtube.com or whatever, and you when you press enter, so उस server के पास एक HTTP request जाती है, HTTP get request, and the response is the website, the web page. So in order to mimic that request in your Python code, you need request library. Okay, then there is Beautiful Soup. Beautiful Soup is an HTML parser library. It is used to parse HTML content. Once you get the HTML content using request library, then you have to pass it to the Beautiful Soup constructor, ताकि उससे Beautiful Soup object बने, एक HTML tree आपके पास बन जाए, और Beautiful Soup then allows you many methods to search for the content, to scrap the content out of that HTML source code. Selenium हमारे पास एक टूल है which is used in web automation. तो ये हमारे पास उन स्टेजेस पे यूज होता है जब हमें एक डायनामिक वेबसाइट को स्क्रैप करना होता है. What we do, we use Selenium. Selenium basically provides an API for Python, for JavaScript, and some other languages. So you can use Selenium in your Python code to control your browser. अब हमें ये इसलिए चाहिए होता है कि कुछ वेबसाइट्स, बल्कि मोस्टली वेबसाइट जो होती है, दे आर डायनामिक वेबसाइट. डायनामिक वेबसाइट ये होता है कि व्हेन यू सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर, जो आपको रिस्पांस में आता है, बहुत कम डेटा होता है उसमें. सो व्हाट यू सी इन द ब्राउजर, जो डेटा आपको ब्राउजर में नजर आता है वेबसाइट से रिलेटेड, इट इज मोस्टली जनरेटेड थ्रू जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट आपके ब्राउजर में एग्जीक्यूट होता है एंड इट क्रिएट्स दैट डेटा. तो जब आप यूजिंग रिक्वेस्ट गेट करते हैं पेज को, उसमें वो डेटा नहीं होता है, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन के बाद वो डेटा जनरेट होता है. और जब आप रिक्वेस्ट को यूज करते हैं तो जावास्क्रिप्ट आपका एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, क्योंकि आप ब्राउजर को यूज नहीं कर रहे. तो Selenium allows you to do that, कि आप अपने ब्राउजर को कंट्रोल करें, अपने ब्राउजर को यूज करके आप रिक्वेस्ट सेंड करें, बिल्कुल एक नॉर्मली जैसे आप एक ह्यूमन एक वेबसाइट गेट करता है, उस तरीके से अपने कोड में ऑटोमेशन करके आप वेबसाइट को गेट कर सकते हैं. और जब उस तरीके से आप वेबसाइट को गेट करते हैं, तो आपके ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होता है एंड इट क्रिएट्स दैट वेबसाइट, दैट वेब पेज एंड ऑल द कंटेंट. उसके बाद जब आप HTML सोर्स गेट करते हैं, नाउ दैट HTML सोर्स हैज योर रिक्वायर्ड डेटा. तो उसके बाद Selenium के सेलेक्टर्स को यूज करके यू कैन गेट द डेटा, और यू कैन सिंपली गेट द पेज सोर्स कोड, और उसे ब्यूटीफुल सूप को पास कर सकते हैं, और वहां से आप डेटा गेट कर सकते हैं. देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस आफ्टर दैट, बट Selenium is the main idea is to control the browser so that you execute the JavaScript code and you get the required data. Remodule is basically used for scrapping. So this is a module for regular expressions. For example, हमें एक वेब पेज है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा है, और हम उसमें से गेट करना चाहते हैं, ईमेल्स को गेट करना चाहते हैं. सो हमने एक पैटर्न लिखा कि एस्ट्रिस्क वट एवर द पैटर्न जो हमने बनाया, और एट द एंड @gmail.com. सो हमने एक पैटर्न स्पेसिफाई किया कि जो टेक्स्ट है जिसमें @gmail.com आता है, उससे पहले जो भी है वो टेक्स्ट हमें गेट करके दो. तो ये करने के लिए वी नीड
this RE module in Python to create the pattern, to create the regular expression, जो कि हमें उस text में से हमारा required data जो matching है वो get करके दें. Scrapy is another library to build spiders. Large scale scraping में बहुत ज़्यादा use होता है Scrapy library. Okay, and then there's Pandas. So Pandas is essentially a library which is a Python library. It's an open source library. It is used for data manipulation. Data manipulate करने के लिए data analysis में बहुत ज़्यादा इसके use है, लेकिन यहाँ पे web scraping में बहुत ज़्यादा beneficial इसलिए है क्योंकि once we get the data from the website, हम directly उसे for some reasons हम उसे write नहीं करना चाहते directly on the disk. हम चाहते हैं कि उसे हम रैम के अंदर ही रखें और उसे मैनिपुलेट करें, उसकी क्लेंजिंग करें और उसके बाद उसे एक खूबसूरत फॉर्मेट में, सीएसवी फॉर्मेट में या जेसन फॉर्मेट में हम स्टोर करें. तो डेटा स्क्रैप करने के बाद और उसे एक डेटा फ्रेम में स्टोर करने के लिए वी नीड pandas library and it is extremely important for that. You can do a lot of things with pandas. Okay, do you guys have any question up till now, or should I go for the demo? Okay, so we should go for the demo. अच्छा, तो Yes, sir. okay, okay, जी. Okay, should I go for the demo? Okay, I thought you're going to ask a question. Uh, so here's a website. Okay, quotes2scrap.com. अब इस वेबसाइट पे बहुत सारे quotations पड़े हुए हैं. You can see कि बहुत सारे quotations हैं यहाँ पे. अब हम चाहते हैं कि हम इस वेबसाइट में से quotations को scrap करें. तो सबसे पहले हमारा इस प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप ये होगा कि वी विल इंस्पेक्ट दिस वेबसाइट. इंस्पेक्ट हम डेव टूल्स को यूज़ करके इस वेबसाइट को इंस्पेक्ट करेंगे. इसके अंडरलाइंग जो इसका सोर्स कोड है, HTML सोर्स कोड है, उसे हम इंस्पेक्ट करेंगे. ओके, सो वी वांट टू स्क्रैप द कोड्स. So we will see which HTML elements contain this codes. अच्छा, तो हमें यहाँ पे as you can see कि हमारा जो कोड है it's inside span element और हमारा जो ऑथर का नेम है जिसकी कोटेशन है it's inside a small HTML element. If you go up, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक div element है, div which belongs to a class quote and it contains both the quotation and both the author name. So in our code, what we need to get is the div element of which belongs to class quote. अच्छा, अब इसे सेलेक्ट करने के लिए बाय द वे ये सिर्फ एक कोटेशन नहीं है जो कि इसको बिलोंग करती है. जितने भी आपके पास ये नीचे कोड्स हैं, it also belongs to a div element with class code. Okay, you have to like little analyze the website to see this pattern कि जो आपका required data है वो किस HTML elements में, किस HTML tags में वो stored है. So here हमारा जो डेटा है वो कोट के इस div में stored है. In order to get this element, what we have to do is that we will use XPath selector or CSS selector or any other selector. I will use CSS selector. Let's see कि CSS selector को हम use करते हैं. So मैं कहता हूँ कि dot and class name. As you can see, it has highlighted it. Okay, हमें div element हमारा highlight हो गया है. एंड यू कैन सी कि हमारा div element है. अगर हम अपने कोड में इस सेलेक्टर को यूज करें सो वो इस div element को सेलेक्ट करके हमें देगा. अच्छा, तो हमने कुछ वेरिफिकेशन, कुछ वैलिडेशन कर लिए हैं. अब हम जाते हैं अपने एडिटर पे और लाइव देखते हैं कि कैसे वी कैन बिल्ड अ स्क्रैपर टू स्क्रैप दिस. So this is our URL, okay, that we want to scrap, and we will
import our required libraries. We will first import request library to make request to this URL, and we will need equal soup constructor for that, for parsing, and pandas to store the data in a data frame. Okay, so now to get the content, to get to make the HTTP request, it's very simple to make the HTTP request. You can simply use request library, pass it the URL. Now in the response, if you print the response content, you can see कि आपके पास एक HTML source आना चाहिए. Okay, it's taking a while. Okay, as as you can see कि हमारे पास एक HTML content आ गया. So that is the underlying source code जो हमारे जो वेबसाइट हम स्क्रैप करना चाहते हैं उसका underlying source code है. अच्छा, हमने देख लिया हमारे पास सक्सेसफुली source code आ गया है इसका. Now the next thing we need to do is कि हमें उसे HTML parser को इस content को देना है. HTML parser को जब हम देंगे, let's beautiful soup constructor is that what we need. हम उसे response.content पास करेंगे, and HTML parser by default जो parser ये use करता है HTML.parser. If you don't understand what HTML.parser is, don't it might confuse you, but by default ये एक HTML parser use करता है. There are XML parser and a few other parser जो कि हमें यहाँ पे specify अगर हम ना करें तो by default HTML parser use होता है, but you can specify them. आपके parser पे depend करता है कि आपकी efficiency कितनी है. So we will specify that one. हम अब यहाँ तक हमारे पास एक beautiful soup object बन गया है. That we can हम इस beautiful soup object के अंदर हम check कर सकते हैं for our data जो हमें required है. Soup dot select, and हम इसे वो जो हमने वेबसाइट पे जब हमने एनालिसिस की और हमने फाइंड किया कि हमारे हमारे कोड्स किस एलिमेंट के अंदर स्टोर हैं, एंड वी केम टू नो कि हमारे पास एक एलिमेंट है which belongs to quotes class जिसके अंदर हमारे तमाम कोटेशन स्टोर्ड हैं. So we'll get that one. Okay, okay, now this should return a list of the HTML elements. Let's just print and see कि हमारे पास list successfully आ रही है कि नहीं. Okay, it's the list is empty. Wait a second. Mm, okay, let me do some troubleshooting. Is the screen visible? Okay, I just someone can please confirm. Yes, sir, it's visible. Okay. Okay, wait a second.
I'm not sure what problem is happening at the runtime. Okay, so this was the working code that I tested before the session. Uh, it's working, so I'll just go through this code and step by step and I'll tell you कि किस स्टेज पे हम क्या करें. So वो जो हमने इंपोर्ट किया, import statement summary as it is है. सबसे पहले हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट्स को यूज़ करके अपने HTML पेज को गेट किया है एंड आफ्टर दैट हमने उसे ब्यूटीफुल सूप ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके बाद हम सेलेक्ट कर रहे हैं कोड्स को सेलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है जी कि हम ये बेसिकली हमें ये वाला लाइन जो है हमें सेलेक्ट करके देगा वो तमाम कोड्स जो हमारे वेबसाइट पे है. सो द रिटर्न ऑफ दिस इज गोइंग टू बी अ लिस्ट जिसके अंदर div एलिमेंट्स होंगे. div एलिमेंट्स के अंदर क्या होगा? div एलिमेंट्स के अंदर स्पैन एलिमेंट होगा जो हमने एनालाइज किया जिसमें हमारा कोड पड़ा है और एक स्मॉल एलिमेंट होगा जिसके अंदर उस कोड का ऑथर नेम पड़ा है. आफ्टर दैट वी क्रिएट पांडास डेटा फ्रेम. हम एक डेटा फ्रेम बनाते हैं जिसके कॉलम्स है कोड और ऑथर. इट्स एन एम्प्टी डेटा फ्रेम. इस वक्त इसमें कुछ भी नहीं है. हम जब डेटा स्क्रैप करेंगे तो हम इस डेटा फ्रेम में अपने डेटा को अपेंड करेंगे. ओके, तो यहाँ पे हमने चूंकि कोड्स को गेट कर लिया हमारे पास एट दिस पॉइंट हमारे पास एक लिस्ट आ चुका है जिसमें हमारे तमाम कोड्स मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ div एलिमेंट्स. तो वी विल जस्ट इटरेट ओवर दैट लिस्ट. हम एक एक कोड को उठाएंगे एंड हमने यहाँ पे यूज किया है सेलेक्ट वन से. सेलेक्ट वन बेसिकली एक मेथड है जिसको हम एक CSS सेलेक्टर पास करते हैं. CSS सेलेक्टर सूप ऑब्जेक्ट में हमें उसमें से सेलेक्ट करता है जो भी CSS सेलेक्टर हमने यूज किया होता है. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिखाया कि डॉट क्लास नेम हमें HTML एलिमेंट में वो तमाम एलिमेंट्स जो कि उस क्लास को बिलोंग करते हैं वो सेलेक्ट करके देता है. तो इसी तरीके से हम सेलेक्ट वन को एक CSS सेलेक्टर पास करते हैं जो कि कुछ सेलेक्ट करके देगा. इस केस में जो हमारा ये वाला फर्स्ट लाइन है इस केस में ये हमें कोटेशन सेलेक्ट करके दे रहा है. उसके बाद उसकी सिलेक्शन के बाद हम डॉट टेक्स्ट का एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं उसके ऊपर. डॉट टेक्स्ट बेसिकली उस एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट है जो वो कोट है उसे सेलेक्ट करेगा. एंड डॉट स्ट्रिप का मेथड बेसिकली वाइट स्पेसेस जो उस टेक्स्ट के आगे पीछे है उसे रिमूव कर देगा. तो हमें अपना जो कोड है वो विदाउट एनी वाइट स्पेसेस मिल जाएगा. तो उसे हम कोड डेटा में वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया है. आफ्टर दैट सेम इज द केस विद द ऑथर डेटा. हमने CSS सेलेक्टर स्पेसिफाई किया कि जो हमें ऑथर का डेटा जो हमें ऑथर का नेम सेलेक्ट करके दे दे. तो वो हमारे ऑथर डेटा वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया. आफ्टर दैट वी आर अपेंडिंग दैट डेटा. हमारा जो कोड है वो और जो ऑथर नेम है उसे हम अपेंड कर रहे हैं अपने डेटा फ्रेम में जो हमने यहाँ पे एम्प्टी बनाया था. ओके, इट्स अ सिंपल अपेंड स्टेटमेंट. इग्नोर इंडेक्स इज बेसिकली कि वो ये ज़रूरी है जब हम अपेंड करते हैं डेटा फ्रेम में तो इस पैरामीटर को ट्रू रखना ज़रूरी होता है. ओके, आफ्टर दैट वी जस्ट प्रिंट कि जो हमने डेटा फ्रेम गेट किया है एंड दिस इज दैट डेटा फ्रेम जो हमने गेट किया है. ओके, ओके, लेट्स ट्राई वंस अगेन ताकि क्लियर हो थोड़ा सा. ओके, इट्स टेकिंग अ व्हाइल. ओके, सो एज यू कैन सी हियर कि इस डेटा फ्रेम को आप देख सकते हैं कि एट द टॉप हमारे पास कोड है और एक कॉलम हमारे पास कोड का है, एक कॉलम हमारे पास ऑथर का है. और जो हमने उस पेज में से एलिमेंट्स जो हमने रिकॉर्ड्स गेट किए हैं, यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट कोटेशन, द वर्ल्ड एज वी हैव सीन एटसेट्रा एंड इट्स रिटन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन. अब हमारे पास डेटा फ्रेम तो तैयार हो गया है. डेटा फ्रेम से पांडास डेटा फ्रेम से एक CSV फाइल में उसे स्टोर करना इट्स जस्ट वन लाइन स्टेटमेंट. यू कैन सिंपली यूज डेटा फ्रेम DF whatever जो भी आपने उसे नाम दिया है उस पर आप ये मेथड यूज कर सकते हैं टू CSV एंड आप CSV फाइल का नाम स्पेसिफाई करें इंडेक्स फॉल्स ताकि वो इंडेक्सेस वगैरह को इग्नोर कर दे और आपके पास एक CSV फाइल जनरेट हो जाएगी.
So I'll show you कि वो CSV फाइल आपको नजर कैसे आएगी. Here you can see. Okay, might be use Vim for that. Okay, so as you can see हमारे पास एक CSV फाइल जनरेट हो गई है. तो फर्स्ट इसका जो कॉलम है that is code, second is author, and you can see कि ये हमारे पास डेटा जनरेट हो गया है. अब इस स्क्रैपर को अगर हम कभी भी कितनी बार भी रन करें, जब भी रन करें, हमें उस वेबसाइट से जो अपडेटेड डेटा है वो स्क्रैप करके मिल जाएगा और एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, CSV फॉर्मेट में हमारे पास फाइल तैयार हो जाएगी. वी जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट इट. सो इतना ये इसने हमें इस प्रोवाइड कर दिया है. ओके, आई एक्चुअली थॉट कि मैं लाइव यहाँ पे स्क्रैपर बिल्ड करूँगा, बट फॉर सम रीज़न आई डोंट नो, some errors happening, but I hope you get the idea. Okay, can someone please confirm scrapper की समझ आ गई है, how it's I working? have I have one question, sir. जी जी, please. Sure. सर हम यहाँ पे यूआरएल की जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो जी, HTTPS के साथ क्यों भेज रहे हैं? लाइक ये यूआरएल हमें जस्ट लाइक google.com या quotes डॉट ये जो हम आगे लिख रहे हैं ये यहाँ से क्यों नहीं उठा रहा? हमें HTTPS क्यों लगाना पड़ता है इसके स्टार्टिंग में? this is actually a complete URL that you have to specify. नो So सर अगर हम जस्ट हम अगर क्रोम ब्राउजर के ऊपर जाएं या किसी भी ब्राउजर के ऊपर जाएं तो हम जस्ट okay, ये लिखते हैं quotes.toScrap.com. तो लाइक quotes.toScrap भी लिखें .com भी ना लगाएं तो वो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर यूआरएल के ऊपर हमें ले जाता है. हाँ, एक्चुअली दैट इज द ब्राउजर. ठीक है जी, ब्राउजर की वर्किंग वो तो डिफरेंट होती है. वो डिटेक्ट कर लेता है कि आप क्या टाइप करना चाहते हैं. आप .com टाइप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ले जाता है, बट दैट इज द ब्राउजर. उस वो तो ब्राउजर के अंदर फंक्शनलिटी होती है ना. लेकिन जब आप कोडिंग करते हैं, आप कोड में कोई चीज स्पेसिफाई करते हैं, तो आपने एक कंप्लीट यूआरएल टाइप करना होता है. सो सर ये बैकएंड पे किस तरह इसका वर्क फ्लो होता है तो इसके बारे में कुछ गाइड करेंगे हमें? जी, तो HTTP गेट रिक्वेस्ट आप सर्वर को सेंड करते हैं. ठीक है जी, विद आपके हेडर्स. अच्छा, हमारे पास ये भी होता है कि समटाइम्स आपके बॉट से जब रिक्वेस्ट जाती है तो उसके हेडर्स डिफरेंट होते हैं. आप अपने ब्राउज़र से जब रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो उन उसके प्रॉपर हेडर्स होते हैं. आपका प्रॉपर यूज़र एजेंट होता है, कुकीज़ वगैरह वो तमाम चीज़ें होती हैं. तो कुछ वेबसाइट्स ने ये भी इवन प्रोटेक्शन लगाई होती है कि अगर यूज़र एजेंट इनवैलिड है और एक प्रॉपर यूज़र एजेंट नहीं है, तो वो उन रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दें. लेकिन फॉर्चुनेटली जो हम यहाँ पे जिस वेबसाइट को हम देख रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी सिंपल वेबसाइट, इवन मेंट फॉर स्क्रैपिंग. स्टैटिक वेबसाइट है, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म उसने नहीं लगाया. तो हम इजीली विदाउट स्पेसिफाइंग एनी हेडर्स, हम सिंपल एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली एक रिक्वेस्ट उसके पास जा रही है और वो हमें हमारा जो HTML कंटेंट है, जो वेब पेज है, वो रिटर्न कर रहा है. अच्छा सर आई हैव अनदर क्वेश्चन लाइक इसे जो यस है प्लीज. जैसे हमारे यूआरएल पे रिक्वेस्ट गई है ठीक है. अब कुछ ऐसे जिस तरह अभी आपने कहा कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि ब्लॉक साइट्स होती हैं हमें तो यहाँ पे हमें स्क्रैपर क्या रिटर्न करेगा जो ब्लॉक साइट्स के लिए जो कंटेंट है वो इनवैलिड हम रिस्पॉन्स. ओके, इनवैलिड आपके पास रिस्पॉन्स हमारी आपके. जी एग्जीक्यूशन जी. टर्मिनेट हो जाएगी या फिर हमें दोबारा से प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा? नहीं, अगर आप 1000 टाइम्स भी रन करेंगे तो आपको आई गेस इट्स 401, और अनऑथराइज्ड आई थिंक उसका मैं कोड भूल गया हूँ, बट आपको 400 या 401 इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा. क्योंकि आप अगर अपने बॉट से, दिस इज अ बॉट, ओके एक्चुअली, तो इससे जब भी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो उसके हेडर्स में तो ये मेंशन होगा कि ये वैलिड हेडर्स को यूज नहीं कर रहा, वैलिड यूजर एजेंट को यूज नहीं कर रहा. तो आप जितनी बार भी उसे सेंड करेंगे वो आपको वही रिस्पॉन्स सेंड करेगा, अनलेस आप अपने हेडर्स चेंज करें, यूजर एजेंट चेंज करें, तो फिर आप उसको डिसीव कर सकते हैं, उस सर्वर को. यहाँ पे जो हमें रिस्पॉन्स आया है, तो द रिस्पॉन्स कोड इज 200. ओके ओके, ठीक है. मैं अच्छा आपको. सर यहाँ पे ये जी तो एक यूआरएल है सिंगल यूआरएल के लिए. फॉर एग्जांपल हमारे पास हम खुद से कोई इस तरह का सर्वर बनाना चाहते हैं या खुद से अपने बोर्ड को ऑटोमेट करना चाहते हैं लाइक मिलियंस ऑफ यूआरएल्स को जाके टेस्ट करे वहाँ पे उसकी क्लासिफिकेशन करे जो भी उसने डिफरेंट हम चाह रहे हैं
वो हमारा हम्म, काम करे। तो उनमें से कुछ साइट ऐसी भी होंगी लाइक ब्लॉक है, तो जो ब्लॉक साइट होंगी तो उनके लिए तो हमारा प्रोग्राम लाइक टर्मिनेट हो जाएगा। जो फॉर एग्जांपल जो ब्लॉक यूआरएल है वो हमारे इंडेक्स 1000 के ऊपर पड़ा हुआ है, और 1000 से ऑनवर्ड हमारी जितनी भी साइट्स हैं वो सारी हमारे पास ओके हैं, उसका स्टेटस 200 आ रहा है। तो जब हमारा कंट्रोल 1000 वाली लाइन के ऊपर जाएगा या 1000 इंडेक्स के यूआरएल को चेक कर रहा होगा, तो वहां से हमें टर्मिनेशन स्टॉप हो जाएगी, तो वो इशू नहीं होगा लाइक वो बाकियों को स्किप कर जाएगा। बेसिकली जब आप एक वेबसाइट को स्क्रैप करते हैं तो जैसे कि मैंने एक वेबसाइट को सबसे पहले एनालाइज किया और मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है एक वेबसाइट को स्क्रैप करने के लिए। तो इस तरीके से हम अगर 1000 वेबसाइट को हम स्क्रैप कर रहे हैं तो उनका अंडरलाइंग जो HTML सोर्स है फॉर एवरी वेबसाइट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, तो आप उसके लिए एक डिफरेंट स्क्रैपर बनाएंगे। तो यस, आप उसको टेस्ट करेंगे, हर एक वेबसाइट के लिए आप एक डिफरेंट स्क्रैपर बनाएंगे। नहीं सर, एक ही प्रोग्राम के अंदर हम मिलियंस ऑफ यूआरएल्स को नहीं टेस्ट कर सकते। सेम कंटेंट वो हम उठाना चाह रहे हैं, लाइक सोशल मीडिया साइट्स हाँ, होगी, सोशल मीडिया साइट्स होगी हमारे पास, हम उसमें से लाइक कमेंट्स उठाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट्स की नेचर सेम होती है, और हमने उधर से जनरल पब्लिक की सजेशंस लेनी है कुछ ना कुछ ना, तो वो जो यूआरएल्स की कैटेगरीज हैं वो सेम है। और कुछ फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कुछ सोशल साइट्स इस तरह की हैं जो पीटीए की तरफ से, पीटीए के सर्वर के ऊपर जब हमारी रिक्वेस्ट जाती है तो वो ऑलरेडी बैंड होते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह की जो साइट्स हैं वो तो ब्लॉक्ड हैं, और हम मल्टीपल यूआरएल्स एट अ टाइम अपने बोर्ड को दे रहे हैं कि आप इन इन यूआरएल्स पे जाके अपनी जो है स्क्रैपिंग करें, वहां से डाटा उठाएं, और फिर हमारे लाइक एक सीएसवी फाइल के अंदर या हमें कुछ आउटपुट या कुछ जो भी हम प्रिडिक्शन लेना चाह रहे हैं वो हमें शो करे। तो सर मेरा क्वेश्चन अगेन यही है कि ये जो है फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे यूआरएल हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैंड हैं और सोशल मीडिया साइट्स हैं, और वो हम यूआरएल अपने बोर्ड को भी दे रहे हैं। अब बोर्ड उन यूआरएल के अगेंस्ट हमें टर्मिनेट प्रोग्राम, हमारा जो एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी, या हमें कुछ एरर शो कराएगा, एरर शो कराने के बाद वो नेक्स्ट यूआरएल को पिकअप कर लेगा। इस सिचुएशन को मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहा हूँ। जी, अच्छा, कुछ बातें हैं। अगर एक कंट्री में एक वेबसाइट बैन है तो आप प्रॉक्सी सर्वर यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली यूज़ करते हैं। इवन इवन मैंने एक क्लाइंट के लिए कोड लिखा था, तो उसे जब मैं रन करता था वो सक्सेसफुली डेटा को स्क्रैप करता था। ही वॉज अ जर्मन। तो जब वो स्क्रैप करता, जब वो कोड रन करता था तो उसके पास उसे क्लाउडफेयर बॉट डिटेक्शन उसके सामने आती थी। सो मैंने उससे कहा कि वो वीपीएन को यूज़ करे और अपना जो सिस्टम का आईपी एड्रेस है उसे चेंज करे। वो करने से उसका हो गया। सो अगर एक कंट्री में एक चीज़ बैन है, वो एक्सेस नहीं हो सकती, तो उसके लिए यू कैन यूज़ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी सर्वर्स आप यूज़ कर सकते हैं इन योर कोड। दैट्स वन थिंग। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर वेबसाइट ब्लॉक हो जाती है एंड यू डोंट वांट कि आपका कोड टर्मिनेट हो, वो आगे मूव करे, सो देयर इज ऑलवेज ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं कि किसी जगह पे अगर इनवैलिड रिस्पॉन्स आ जाए, 200 ओके रिस्पॉन्स ना आए, सो in that case you can just move on. Okay. श्योर सर, थैंक यू। Okay, welcome. Okay, किसी और का कोई क्वेश्चन है? Okay, I hope this code is clear. So I now just want okay, someone कोई कुछ कहना चाहता है? uh, okay, so we can move on. So there's some other code जो कि I want to show you. दिस इज द कोड जो कि एक वेबसाइट से oyo.com एक वेबसाइट है जिसमें यूज्ड कार्स का डेटा पड़ा होता है। आई हैव रिटन दिस कोड अबाउट 6 months ago, आई गेस। मुझे याद नहीं है कि, लेकिन इसका काफ़ी टाइम हो गया। सो दिस कोड बेसिकली ये उस वेबसाइट पे जाके उस यूज्ड कार से लाइक डिफरेंट यूआरएल्स हमारे पास यहाँ पे है। डिफरेंट यूआरएल्स हमने यहाँ पे लिए हुए उस साइट के अंदर एक जर्मनी को सेलेक्ट करके या किसी कंट्री को सेलेक्ट करके, तो आपके पास सेलेक्ट करने के बाद इन द टॉप जो आपका यूआरएल बार होता है उसमें एक यूआरएल जनरेट हो जाता है। वो यूआरएल्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं ताकि फॉर हर कंट्री हम उस कार्स को स्क्रैप कर सकें। अच्छा, अब सिंपली इसको रन करने से scrapping begins. Okay, so about thousands of records ये scrap कर लेगा within
within a short period of time. स्क्रैपिंग चल रही है इसकी. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज के मैंने इसे काफ़ी महीनों पहले लिखा है, बट राइट नाउ द डेटा दैट आई एम गेटिंग, इट्स द लेटेस्ट डेटा ऑन दैट वेबसाइट. विदिन विदिन जस्ट वन कमांड मेरे पास अपडेटेड डेटा आ रहा है. सो दिस इज द पावर दैट आई वांटेड टू शो यू. दिस इज द ऑटोमेशन. कि ये काम आप अगर मैनुअली स्क्रैपिंग करें तो नहीं कर सकते हैं, या किसी टूल को, किसी सॉफ्टवेयर को उसको यूज करके करे तो भी नहीं कर सकते हैं. आपने एक स्क्रैपर बना लिया है, आप उसे रन करें. अब 1 साल बाद इसे मैं रन करूं तो मुझे 1 साल बाद का जो उस टाइम पे अपडेटेड डेटा होगा वो मिल जाएगा. ओके, नाउ आई कैन जस्ट स्टॉप दिस कोड. ओके, लेट्स गेट बैक टू द प्रेजेंटेशन. ओके, स्क्रैपिंग डायनामिक वेबसाइट्स एंड स्क्रैपिंग स्टैटिक वेबसाइट. तो जो वेबसाइट हमने स्क्रैप की, codes to scrap, that was a static website. काफी simple थी. We just send request, get request to the server, और जो हमें response मिल जाता है, so that response contains our data और उसे हम easily scrap कर लेते हैं. But most of the websites that you will see on the web are dynamic websites. डायनामिक मीन्स के जो वेबसाइट में जो कंटेंट आपको नजर आ रहा है, इट इज जनरेटेड बाय द जावास्क्रिप्ट. एंड आप जब रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सिंपल यूजिंग द रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, तो उसमें वो कंटेंट नहीं होता. जब सर्वर रिस्पॉन्ड कर देता है, ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट होता है, तो वो कंटेंट जनरेट होता है. सो फॉर दैट, to scrap those websites, you would need Selenium. जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले कहा था कि Selenium को यूज करके you will automate your browser, and उस तरीके से आप इस डेटा को गेट कर सकते हैं. दूसरा तरीका यह है कि you can use a hidden API. Now hidden API is something कि that the front end of the website uses to send requests to the server. uh, बगैर लोडिंग के वो जो है फ्रंट एंड बैक एंड को रिक्वेस्ट सेंड करता है टू गेट द डेटा. ठीक है जी, कि जो डेटा जेसन फॉर्मेट में वो डेटा को गेट करे ताकि जावास्क्रिप्ट उस डेटा को यूज करे उस वेबसाइट पे डिस्प्ले करने के लिए. तो वो आपको मिलेगा डेव टूल्स में. इफ यू गो टू द नेटवर्क टैब, और नेटवर्क टैब में फिर आप जाएंगे XHR टैब में, और वहां पे उस टैब को जब आप एनालाइज करेंगे, सो यू विल सी द रिक्वेस्ट दैट फ्रंट एंड इज मेकिंग टू द बैक एंड फॉर द डेटा. मल्टीपल रिक्वेस्ट होती है उसमें. आपने वो रिक्वेस्ट देखना होता है कि जिसका रिटर्न टाइप जेसन होता है, बिकॉज जेसन इज द रिक्वेस्ट जो कि विच कंटेन्स द डेटा. ओके, जेसन डेटा आपने उसमें से ढूंढना होता है. देन व्हाट यू डू, यू मिमिक दैट रिक्वेस्ट जो कि वो फ्रंट एंड जो रिक्वेस्ट सेंड कर रही है, यू विल मिमिक दैट रिक्वेस्ट इन योर पाइथन कोड और एनी अदर लैंग्वेज, एंड आप सर्वर को वो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो आपको भी जो रिटर्न आएगा दैट विल बी अ जेसन डेटा. इसका फायदा ये होगा कि आपको उस डायनेमिक वेबसाइट के फ्रंट एंड से HTML सोर्स से उस डेटा को स्क्रैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस पार्ट, इट्स ओके, क्योंकि डायनेमिक वेबसाइट्स को स्क्रैप करना इज कंपैरेटिवली ट्रिकी एंड हार्ड. ओके, सम लीगल कंसर्न्स कि स्क्रैपिंग लीगल है या इलीगल है. तो स्क्रैपिंग पब्लिक डेटा इज लीगल. जो डेटा वेबसाइट्स ने पब्लिकली डिस्प्ले किया है, विच द होल वर्ल्ड कैन सी, इट इज ओके टू स्क्रैप देम. लेकिन स्क्रैप करने के बाद उसे फिर अगर आप डार्क वेब पे सेल कर रहे हैं, इफ यू डूइंग समथिंग रॉन्ग विद इट और समथिंग, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. बट for the scrapping part, it is legal to scrap the public data. Okay. You also have to see कि आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर रहे. एक वेबसाइट है और छोटी वेबसाइट है, इतने पावरफुल उनके सर्वर्स नहीं है, और आप उसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं. तो जब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आप उसे सेंड करेंगे, बेसिकली सर्वर को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो अपने जेन्युइन यूजर्स को सर्व कर सके. सो द सर्वर विल गो डाउन, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू बी केयरफुल इन दैट पार्ट कि आप किसी की सर्विस को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे. बेसिकली डीडोस अटैक में भी ये होता है कि देयर आर डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स होते हैं. हमने एक
बॉट्स बनाए होते हैं हैकर्स ने, और वो एक वेबसाइट को टारगेट करते हैं और उसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट सेंड करते हैं इन अ वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, और वो सर्वर जो है इट इवेंचुअली गेट्स डाउन और वो जेन्युइन यूजर्स को सर्व नहीं कर पाता. सो यू हैव टू बी केयरफुल कि यू आर नॉट सेंडिंग टू मच रिक्वेस्ट, और ऐसे टाइम पे है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेबसाइट जो जहाँ पे जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रही होती है, सो यू डोंट डू स्क्रैपिंग एट दैट टाइम. Plus, I also told you to read the robots.txt file. It has mentioned some rules. Okay, if the data is public, you can scrap it, but it's it's good if you use the robots.txt file because the owner has made some rules, and he has given you like the things कि आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते. So it's an ethical thing to do. अच्छा, लीगल कंसर्न्स की बात करें तो अभी भी एक केस जो है वो चल रहा है यूएस में, मेटा का वर्सेस ब्राइट डेटा, एक इजरायली बेस्ड कंपनी है. सो व्हाट मेटा सेड के ब्राइट डेटा जो है उनका डेटा स्क्रैप कर रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है, डिफरेंट एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं. बट रिसेंटली पता चला है उस केस में कि मेटा was the partner of was the partner was the customer of Bright Data for 6 years. 6 साल तक मेटा खुद डेटा ब्राइट डेटा के साथ था, उस उनसे डेटा ले रहा था ताकि वो यूजर्स को वो जो एड्स डिस्प्ले करते हैं उन्हें इन्हांस कर सके. सो मेटा वाज अ पार्टनर. सो इट सीम्स लाइक के जो वेबसाइट्स हैं दे वांट टू स्क्रैप बट दे डोंट वांट टू गेट स्क्रैप्ड. बट द लॉ डजंट केयर अबाउट समवन्स विशेस. ठीक है जी, कि अगर कोई वेबसाइट चाहता है कि इस तरह हो तो उस तरह हो जाए. इट डजंट इट इट्स नॉट लाइक दैट. तो स्क्रैपिंग पब्लिक डेटा इज लीगल. एक और केस जो बहुत इंटरेस्टिंग केस था, लिंक्डइन वर्सेस हाईक्यू. हाईक्यू भी डेटा एनालिटिक्स के सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, छोटी सी कंपनी थी कंपैरेटिवली टू लिंक्डइन. तो लिंक्डइन और इनका काफ़ी केस चला काफ़ी सालों तक, और उसमें भी यूएस के कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यही बात की थी कि जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है उसे स्क्रैप करना इट्स लीगल. बाद में इनकी सेटलमेंट हो गई, बट इन केसेस से हमें यही जो वो मिलता है कि जो वेब स्क्रैपिंग है ऑफ द पब्लिक डेटा इट्स परफेक्टली लीगल. बट वी आर नॉट श्योर अबाउट द फ्यूचर कि फ्यूचर में क्या होता है, क्या इसके लिए मजीद रिस्ट्रिक्शंस बनते हैं या नहीं बनते, या क्या होता है क्या नहीं होता. बट फॉर नाउ स्क्रैपिंग पब्लिक डेटा इज लीगल. ओके, एनी क्वेश्चंस? Feel free to ask any question, or should we end the session? Sir, Sir, it's I very have a good. question. Uh, is there Yeah, any question? if anyone have no questions, so we will wind up the session. Uh, okay. Uh, so over to you, Munib. Yes, you can wrap up the session. Asher, I think somebody was asking some question. If there is any question, please do ask Yes, now. yes, Yes, sir, please. I have a question. Yes, please. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पावर ऑटोमेट भी वेब स्क्रैपिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो हम लोग पावर ऑटोमेट क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि पावर प्लेटफॉर्म की हाइप इस वक्त बहुत ज़्यादा है, तो उससे इजीली हो भी जाता है वेब स्क्रैपिंग. तो उस आप क्या प्रिफर करते हैं कि मतलब हम लोग कोडिंग यूज़ करें या फिर पावर ऑटोमेट यूज़ किया जा सकता है? Okay, thank you for asking the question. I haven't personally used Power Automate, so that's why I don't know about its pros and cons. लेकिन अगर आपका काम हो रहा है विदाउट एनी कॉस्ट और आपको वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही कस्टम कोडिंग की, यू कैन गो विद इट. इट्स जस्ट योर चॉइस कि आपको कहाँ से डेटा मिल रहा है. आपको जो चाहिए वो डेटा है. वेब स्क्रैपिंग जो है ये टूल्स के थ्रू करना, ये जो है बिजनेसेस के लिए इसलिए बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि दे नीड अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, ताकि वो एक बार चीज़ को बिल्ड करे और बार बार उसे यूज़ करे. सो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, उनको बहुत फ़ायदा देता है. अगर आपका काम किसी क्रोम एक्सटेंशन से या आपका काम उससे पावर ऑटोमेट से हो रहा है, आपको डेटा चाहिए वो आपको वहाँ से मिल रहा है, यस यू कैन डेफिनेटली यूज़ दैट. बट आई हैव जस्ट गिवन यू सम एग्जांपल्स कि हमें एक बार जब हम स्क्रैपिंग के स्किल को पुख्ता कर लेते हैं, सो वी कैन यूज़ इट एनीवेयर. मतलब हमें वेब ऑटोमेशन में
उसकी हेल्प मिलती है। जैसे कि मैंने आपको यूट्यूब वाले प्रोजेक्ट की एग्जांपल दी कि हमने एक वेबसाइट यूट्यूब पे कुछ सर्च किया, वहाँ से हमने डेटा लिया, फिर किसी और वेबसाइट पे हम गए, वहाँ से हमने डेटा लिया। तो एक प्रॉपर एक बॉट हमने बना लिया जो कि हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड उसने हमने उसे हमने वो उसने हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जो हमें चाहिए थी। सो यस, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, इट्स परफेक्टली अप टू यू। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। Okay, if there's no question, Munib, you can wrap up this session. Right. Thank you, Asha. As we conclude this insightful session, we would like to express our sincere appreciation to our esteemed guest speaker, Malik Ashar Khan. His expertise and vast knowledge in web scraping have enriched our understanding to this powerful tool and its applications. We hope that this session has been informative and useful to everyone. Thank you so much for joining, and we are looking forward to see you again in the next session. Have a very good night, and you all can now leave the session.